શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। દિલ્હી કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટરમાં સમર્થકોનો જમાવડો। કોંગ્રેસ હેડક્વાર્ટરમાં ઢોલ નગારા સાથે સમર્થકો ઉમટી પડ્યા છે। સમર્થકો રાહુલ ગાંધી પ્રિયંકા ગાંધીની ટી શર્ટ પહેરીને આવ્યા છે। બંનેમાં 90 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન થયું હતું। જમ્મુ કાશ્મીરમાં 3 તબક્કામાં મતદાન થયું હતું। आउट कर लीजिए। तो खास हाल में दिल्ली दृश्यों कांग्रेस हेडक्वार्टर आप जी रहा छो कि ज्यां कांग्रेस समर्थकों एकबीजाने मिठाई खवડાવીને जीतनो दावो व्यक्त કરી રહ્યા છે। दिल्ली हेडक्वार्टर से अत्यारे अजय हमारी साथ जुड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से 90 सीटों के लिए दोनों ही राज्यों में मतदान हुआ था, आज शुरुआती रुझान में कांग्रेस हरियाणा हो कि जम्मू कश्मीर हो, दोनों में आगे चल रही है। अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, बड़े लंबे समय बाद कांग्रेस मुख्यालय में इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कांग्रेस मुख्यालय है और उसके ठीक सामने जो है अभी आतिशबाजी की जा रही है। पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं और जो भी कांग्रेस के वर्कर हैं काफी उत्साहित हैं। और खास करके एक जो ट्रेंड है आज कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिल रहा है, उसमें मुख्य बात यह है कि लोग जो पोस्टल बैलेट की जब काउंटिंग शुरू हुई उसी वक्त मिठाई और स्पेशली जलेबी बांट करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जब मैंने पूछा कि आप लोग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से पहले ही इस तरह का मिठाई बांट रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि राहुल गांधी ने कैंपेन के दौरान कहा था कि जलेबी की फैक्ट्री लगा करके किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है, तब भारतीय जनता पार्टी वालों ने तंज किया था कि क्या जलेबी की भी फैक्ट्री होती है, तो जलेबी भी हमारा एक सिंबॉलिक चिन्ह है। लेकिन जिस तरह से रुझानों में अभी कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी काफी उत्साही दिखाई दे रही है और कांग्रेस मुख्यालय पे बड़े लंबे समय बाद इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। अमूमन जब भी कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जाते हैं और क्योंकि ये पहले से तय होता है कि अधिकतर जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें बढ़त दिखाई दी, तो इससे काफी जो कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो कांग्रेस मुख्यालय आए हैं और लगातार आप देख सकते हैं एक के बाद एक आतिशबाजी उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले से ही आश्वस्त थी। उसको लग रहा था कि जिस तरह से वहां पे नायब सिंह सैनी की सरकार या खट्टर सरकार चली है और जिस तरह के मुद्दे 3 मुद्दे हरियाणा में स्पेशली पूरी पब्लिक के बीच कांग्रेस पार्टी ले गई थी, उसमें जवान, किसान और पहलवान। आपने देखा होगा कि किस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, अग्निवीर योजना को लेकर के किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा था और खास करके पहलवानों का आंदोलन जिस तरह से जंतर मंतर या देश के हिस्से पे चला था। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यही वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतेगी और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में इस तरह का जश्न शुरू में ही देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, शुरुआत में ज अत्यारे जोवा मळी रह्युं छे। धन्यवाद तमाम जानकारीओ के लिए। शुरुआत में जोवा मळी रह्युं छे कि कांग्रेस जे छे अत्यारे हरियाणा में तो सरकार बनावी रही है, जम्मू काश्मीर में पण रुझानों में तो आगळ चाली ज रही है। अमारी साथे स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी तरफथी शैलेषभाई अने हेમાંગભાઈ रावल कांग्रेस तरफथी पोतानी प्रतिक्रिया आपवा माटे जोड़ाया छे। हेમાંગભાઈ, घणा समय पछी ज्यारे कोई राज्यना इलेक्शन आवता होय छे अने बैलेट पेपरनी माफ करशो मतगणतरी थती होय छे अने बैलेट पेपरनी गणतरी बाद जोवा मळतुं होय छे कि भाजपना कार्यालयोमां मिठाई वहेंचवानी के फटाकड़ा फोड़वानी शरूआत थई रही छे, थती होय छे। अत्यारे 1 कलाकनो समय थई गयो छे। बंने राज्योनी मतगणतरी कांग्रेस मुख्यालय खाते अत्यारे उजवણીનો माहोल એટલે लागे छे कि नायब सिंह सैनीए जे निवेदन आप्युं छे ए पोते हार स्वीकारी जाणी चूक्या छे। आपनी शुं प्रतिक्रिया? प्रीति, राहुल गांधीजीए जे प्रमाणे भारत जोड़ो यात्रा करी, पहली यात्रा અને ભૂતોનો ભવિષ્યથી 35 કિલોમીટરે ચાલ્યા અને કન્યાકુમારીથી લઈને કાશ્મીર અને બીજી યાત્રા જે છે એની અંદર બીજો પટ્ટો લીધો અને આખા દેશના લોકોનો જે રીતે એમણે પ્રેમ અને વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો એ પ્રમાણે હવે આવા પ્રકારના જશ્ન એ જે છે હવે ટ્રેન્ડ પડી ગયા છે કોંગ્રેસ માટે। હવેની આના પછીના પણ ઇલેક્શનમાં આ જ દ્રશ્યો તમારે બતાવવા પડશે અને એ બતાવવા પડશે એટલા માટે કારણ કે અમને વિશ્વાસ છે જનતા ઉપર અને જનતાએ જે કોંગ્રેસને અત્યારે પ્રેમ આપી રહી છે એ આવનારા દિવસોમાં આનેથી પણ વધારે મહારાષ્ટ્રનું ચૂંટણી હશે કે અન્ય ચૂંટણી હશે એની અંદર પણ પ્રેમ આપવાની છે કારણ કે કોંગ્રેસે હકીકતમાં છેવાડાના માનવીની ચિંતા કરેલી છે અને
રાહુલ ગાંધીજીએ જે પ્રમાણે આખું કેમ્પેન કર્યું, જ્યાં જ્યાં રાહુલજી ગયા છે તમે જુઓ એ બધી જ સીટો અમે જીતી રહ્યા છીએ. અને દેશની અંદર હરિયાણા જે રાજ્ય છે અથવા કોઈ દેશના બીજા રાજ્ય છે એમાં દરેકના પોતાના પ્રશ્ન હોય છે. જેમ તમારા સંવાદદાતાએ દિલ્હીથી જણાવ્યું કે જવાનનો પ્રશ્ન એટલે એમાં અગ્નિવીરનો પ્રશ્ન હતો. એટલે અગ્નિવીરને જે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર રાખી દેવામાં આવ્યા છે એમાં હરિયાણાની અંદર સૌથી વધારે એનો વિરોધ હતો, કારણ કે ત્યાં જ બધા લશ્કરના લોકો વધારે હોય છે. ખેડૂત પણ ખેતી આધારિત છે અને ત્યાં પણ તમે જોયું કે ખેડૂતોનું આંદોલન થયું, એમાં હરિયાણા અને પંજાબના કિસાનો 700થી વધારે શહીદ થયા હતા. એ આંદોલનની પણ અસર હતી. અને ખાસ કરીને પહેલવાન બહેનો જે છે એમના ઉપર થયેલા દુરાચાર અત્યાચારની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કોઈ સ્ટેન્ડ ના લીધું એમના નેતાઓ વિરુદ્ધની અંદર. આ બધું જ ભેગું થયું અને એની અંદર રાહુલ ગાંધી એ જે પ્રમાણે ત્યાં પ્રચાર કર્યો, ઝંઝાવતી પ્રચાર કર્યો, કોઈ પણ ભાજપનું જીજા સાલી આવા બધા ચીપ કક્ષાના નીચ કક્ષાના જે નીચલી કક્ષાના માફ કરજો જે વાતો હતી એ વાતો કોઈ જગ્યાએ ચાલી ના શકી. અને એના જ કારણે આજે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કોંગ્રેસ સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યું છે. નાયબસિંહ સૈની જે છે એમણે તો કીધું કે ભાઈ મારી જવાબદારી છે, પણ જવાબદારી તો આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની હોવી જોઈએ. જ્યારે જીતો છો ત્યારે તમે મોદી સાહેબના લીધે જીતો છો ને મોદી સાહેબને તમે વખાણ કરો છો, તો હારની જવાબદારી પણ મોદી સાહેબે જ લેવી આપણે જોઈએ. શૈલેષભાઈ શું કહી રહ્યા છે આ અંગે? જે પ્રકારના